What is up? Hi, hi, hi. फिर से हम लोग मिल रहे हैं. With a gap of just half an hour? Sure. How are you doing? Yeah. Let's start with practical chemistry right away. And you should have seen me right about now. What's happening? I already showed this to you. But hey, here's a cool animation, or not really animation. It's just a nice way of showing chemistry in its true colors, right? Look at all those beautiful compounds. Yeah. I really wish that you guys have the options of, doing this in a real lab. Hey, good evening, Deepanvita, Mitanshu, Raghav, Sandeep, and Biswajit. I see a lot of familiar faces. That's awesome. So yeah, we're going to start with salt analysis. That's the focus of this session and the next few sessions. I have a few sessions planned. Let's see, what your comfort level is, because this is a topic that you may not have covered from the NEET point of view. Maybe you've done this in a lab. अगर आप chemistry lab है आपके school में, then you've done that. But it's possible. Wow, that's really, really white. Wow, it hurts my eyes. Hold on, let me go to the next slide. Yeah, okay. This is what is in NEET. Okay, this on top of my head is what is on NEET. थोड़ा छोटा हो गया size. Let me increase the size. That's tiny, tiny, tiny. One moment, my friends. It looks large enough from here. All right, that's better, bigger, stronger, faster, higher. That was a song, right? Good evening, Raj, Janish, Shifa. Hey, welcome back. Shifa, थोड़ा प्लान बनाना पड़ेगा. Right now, salt analysis का 4 सेशन का प्लान है, right? The whole of practical chemistry, we'll have to figure out organic expert. Spoiler alert, there is going to be an organic expert who's going to be teaching you soon. Yeah, we'll figure out together and get back to you. Right now, अभी practical chemistry, मतलब salt analysis का part है. Our plan is to do 3 to 4 sessions. Your comfort level, right? The number of sessions is not a lot, but whether it's 3 or 4 or 5, it's up to you guys. इस pace कैसे जाती है, whatever you like doing, we'll do. Okay. Anita, Rupali, Samhita, a lot of new people. Hey, Janesh, what's up? What's up? Good evening. Good evening. Yeah, Shantanu, there are books. There is a book called Vogel, but I don't think आपको उसकी जरूरत है. I was trying to get my hands on it, but I couldn't. But that's for JEE Advanced. I don't think it's necessary for this. So जो मैं आपको दे रहा हूँ on as a part of these slides, this should be more than enough for NEET. Because ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये JEE का ही content है, ठीक है? I have removed some things that are not NEET relevant. जैसे कि the only differences की JEE में इनके साथ कुछ और आयन्स हैं, लाइक CH3CO माइनस आयन, तो एक दो तीन और आयन्स हैं, दैट्स ऑल, राइट? सेम विद कैटायंस में मे बी मर्करी भी है, सिल्वर भी है, राइट? वो सब चीजें हैं जो आपके यहाँ नहीं है. सो वेदर नाउ इट्स JEE और NEET, इस चैप्टर में द लाइन इज वेरी ब्लरी, ओके, बट डोंट वरी, वी गॉट यू कवर्ड. ओके, कूल. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. एनसीडी, या साइमन सचजीत इज एब्सोल्युटली राइट. लैब मैनुअल है. Beautiful idea. I'll give you that link in the description. Add कर दूंगा. बहुत अच्छा idea आपका, सलमान. Yeah, sure. That's also a great idea. That's okay, बिस्वजीत. याद नहीं तो क्या अभी हो जाएगा. Simple है, straightforward है, काफी procedural है. That's why I said you guys will enjoy it, right? Because bio also is really, really procedural. तो डरने की कोई बात नहीं है. वो हम लोग आराम से इसको साथ में कर लेंगे. Test syllabus. सुमित, मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने. It will happen when it happens. Yeah. I say मुश्किल because I don't know about that. But sure, soon. आपके 3 बार बोलने से आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है? कूल, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. सैफ, हाउ यू डूइंग? शैल वी गेट स्टार्टेड? या कविता, व्हाट्स अप? हाउ यू डूइंग? शांतनु, लॉट ऑफ न्यू पीपल. ओके, ऑसम. चलो, सो द जनरल आइडिया ऑफ एनी केमिकल एनालिसिस, राइट? इसकी पहले तो परखते हैं कि है क्या चीज, या व्हाट इज इट? दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. एंड देन अगर पता चल क्या है तो कितना है क्वांटिटी, दैट्स क्वांटिटेटिव. सो ऑल ऑफ व्हाट यू डू इन मोल कॉन्सेप्ट, एंड मे बी in most of physical chemistry is quantitative. Okay, let me write PC. And qualitative, like maybe some bit organic, but mainly IOC may we talk about this qualitative analysis, and we're going to focus on salts के analysis right now. Salts कौन से जो ions आपके syllabus में है, कौन से ions syllabus में है? These, okay? You've got some cations and some anions. I'm erasing this. If you want extra, I'm going to say like very extra, then you maybe look at this book called Vogel. Otherwise, stick around with us. We've got you covered. हम लोग करेंगे साथ में, ठीक है? Cool. Wow, lot of stuff going on. अरे सुमित भाई, आपको बताया तो. Simon, very nice of you to say. Bhubaneswar, Shantanu, Bangalore में हूँ. I'm with you right now in Bhubaneswar, right? And you're with us in Bangalore. That's the beauty of the internet, YouTube. Form question मतलब आपकी बात समझा नहीं. Oh, nahi, I don't think so, Sri Chandra.
So for the benefit of people who are going to watch it later and also to keep the session concise, generic questions about deleted syllabus and stuff, view my other videos. मैंने बहुत डिटेल में बात की है, just the one before this, and also I did a live session on Friday. The live session on Friday was all over the place, I know, but in the last half an hour session that I did at 6 o'clock, हमने बहुत pinpointed बात की है इसके बारे में, ठीक है? We can check it out. Hey Zaki, all right, cool. Let's get started with qualitative analysis of organic salts. Okay, the focus is to figure out cations and anions present in a salt or a mixture of salts. Now look at the last point, mixture of salts. Maybe NEET में ये चीज hopefully नहीं होगी, but it's possible that they'll give you like ये 3-4 चीजें, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें हो रहा है, like you know those quizzes. So step 1 happens, step 2 happens, step 3 happens. Identify beat step में x कौन सा था, y कौन सा. So that's what happens in JEE Advanced, right? JEE Main में इतने मुश्किल लेवल के नहीं होते हैं, and usually NEET maybe they'll give you one of those things. Like they will not say कि 2 या 3 या 4 होंगे. So what I'm trying to say is the differentiation between JEE Main, JEE Advanced and NEET is just going to be the number of things you have to identify. ठीक है? और the theory तो straightforward ही है. Yeah, I'm giving you confidence कि बहुत आसानी से doable है. Okay? And I'll prove that to you when you are going to solve JEE Advanced questions with me. आराम से करेंगे हम लोग when we do this. ठीक है? शहजान थोड़ा मुश्किल होगा. I'll try and make it work. अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है that you want me to repeat, I will definitely do that. पर यहाँ पे terms ठीक है, we'll try. जो कर सकते हैं हम लोग करेंगे. ठीक है? So the part that's contributed by a base is called a cation. The part that's contributed by an acid is called an anion. Okay, as simple as that. So this is also called acid radical, basic radical. अगर ये basic theory है, by basic I mean you know starting theory, no pun intended. ये जरूरी है क्योंकि अगर सवाल में कुछ पूछ लिया, assertion reason टाइप के सवाल आते हैं, right? So इन सब terms को यार भूल मत जाना, ठीक है? इसकी वजह से जबरदस्ती मार्क्स चले जाएंगे. Don't worry, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ गई तो मुश्किल होगी. That's not what this is. ये बहुत डायरेक्ट है. 2-3 चीजें याद रखने की है बस, ठीक है? That's what's happening over here. So in copper sulfate, Cu2 plus is the cation, sulfate ion is the anion. Okay, this is acid radical, this is a basic radical. Simple, straightforward stuff. The first thing that you do, first thing, अगर कोई आपको कोई salts दे दे, क्या करोगे? आप देखोगे यार इसका कलर क्या है, क्या ये डिजोल्व होता है कि नहीं पानी में, कुछ खुशबू आती है कि नहीं. अब खुशबू वाली पार्ट ना खुद मत सूंघिएगा. There are ways to figure it out. Don't ever smell a chemical. That's not the smartest way to figure anything out. Okay, smelling a chemical is literally the worst thing you could do. I know it's not the worst thing. The worst thing you could do is probably ingest the chemical, yeah, to taste it. The second worst thing is you could do is to smell it. So when somebody tells you it smells like something, it's literature. Okay, it smells like this. You don't go and smell it. Okay, that's not what we are trying to teach you. Just a small word of caution अगर आप कभी लैब में गए तो, ठीक है? Sight, smell and all of that. So broadly, this is what we're going to start this session with. Okay, हम लोग देखेंगे कि चलो ठीक है, हमको कुछ mixture of salts दे दिया, कुछ दे दिया, अब उसको क्या करेंगे? We'll try and heat it. अगर कुछ होता है, क्या कलर बदलता है, क्या वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब कुछ गैस निकलती है, या व्हाट्स हैपनिंग, कुछ कंडेंसेशन होता है, और अगर कुछ और कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका क्या कलर है, और ये क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस है, ये सब सवाल शुड कम टू योर माइंड. ओके, अब हम लोग ये कर रहे हैं कि आसाम पे कहाँ होगा? Deepika, hi. I don't understand your question, Deepika. I got thrown off a little bit. Assam is a beautiful state. Hey, there are friends here. The illogical thinker from Discord. He's an awesome person. He's from Guwahati. If he's watching this, sweet guy. He's in college right now. Okay. Anyway, I don't understand your question. NEET तो सब जगह होता है, right? Anyway, cool. We'll get back to this. So, अगर कोई भी आपको salts दिए गए हैं, right? What do you do? देखिए उसको, परखिए. That's what's happening over here. Shazan bhai, I hope समझ में आ रहा है. Arslan, good to see you. Good to see you. Next, things that we'll do. Like बहुत basic चीज. चलो थोड़ा सा आग ला के देखते हैं. जो खुराफाती बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ दे दो, we start burning it. Have you done this? मेरे पास जब जेल पेन था ना, जेल पेन बहुत फैंसी चीज थी. तो जेल पेन का फ्लूइडिश इंक होती है, हम लोग उसको जला के देखते हैं कौन सा कलर दिखता है. That's all this is. But in a supervised environment. ठीक है. वो जेल पेन by the way हरा कलर का जलता था कभी-कभी. Whatever pen the ink was, whatever the color the ink was, वो हमेशा हरा कलर का जलता था. It was very fascinating. मत जलाना यार जेल पेन, मत जलाना, ठीक है? बट दिस फ्लेम टेस्ट, नॉट द जेल वाला, helps you identify some cations. And again, this is an indicatory test. ठीक है? There are some confirmatory tests. मतलब कुछ चीजें हैं जो इंडिकेशन देती हैं कि अच्छा, it could be this. But that's a really good starting point. और ये आसान चीजें करने की. These are easy things to do. Okay? So cations give out color because of electron transition. इसका क्या मतलब है? We'll do that. हम लोग जल्द ही, this is what we're going to start with. Then solubility of water, solubility है नहीं है. बट नीट के सिलेबस में दिस इज नॉट देयर. ओके, इनसॉल्युबल चीजें नीट में नहीं है, ठीक है? तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये प्रोसेस होता है, नीट में नहीं है, मतलब डोंट वरी, इसको मग नहीं करना पड़ेगा कौन सा सॉल्ट इनसॉल्युबल है एटसेट्रा, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा. सो द मेन थिंग दैट विल स्टार्ट विद इज एनालिसिस ऑफ एनायंस एंड कैटायंस.
we'll do a couple today. There are 1, 2 and 3 groups of anions. Cations के भी बहुत ग्रुप हैं, 6 ग्रुप्स हैं, well if you count, but anyway वो बाद में देखेंगे. Let's focus on anions पहले, ठीक है. एनायन से पहले वो जो बेसिक चीजें थी, प्रिलिमिनरी टेस्ट, देखने वाला, सूंघने वाला, नॉट रियली स्मेलिंग इट बट फाइंडिंग आउट द स्मेल एटसेट्रा एटसेट्रा. आई एम गुड मैन, हाउ आर यू डूइंग संदीप? संदीप ब्रोइल क्रैक्स मी अप. लालबाग इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, या श्योर, वहां का लेक अच्छा है. आसपास हो तो एमटीआर जाओ, मे बी एमटीआर हैज गॉट रियली गुड फूड देयर, बट इफ यू गो ऑन अ क्राउडेड डे इट कुड गेट अ लिटिल स्कैरी. खैर, व्हाट आर द स्टेप्स इन सॉल्ट एनालिसिस? लेट्स गेट टू द पॉइंट. मैं काफी दूर है लालबाग से, मैं घर पे बैठा हूँ, दैट्स नियर द ऑफिस, द बायजूस ऑफिस. खैर, एनीवे, फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. मैं बताया आपको, आइडिया दिया किस टाइप की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी. उसके बाद क्या करेंगे? देन वी स्टार्ट पुटिंग केमिकल्स इन द मिक्स. मतलब हम लोग वेट टेस्ट इसको बोलते हैं. ओके, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ड्राई टेस्ट. वी वोंट टॉक अबाउट दिस, मे बी राइट एट द एंड, थोड़े एडवांस्ड आइडिया है, बट क्या मालूम है, नीट शायद तो पूछ ले, बट इट्स जस्ट थ्योरी. विल डू दिस इन द एंड. लास्ट सेशन में वी लुक एट ड्राई टेस्ट. अ वेट टेस्ट इज सेज कि केमिकल डाल दो, इट्स कॉल्ड अ वेट टेस्ट, ठीक है. सो उससे पहले हम लोग को जला के देखेंगे, कलर ये सब करेंगे, डिसॉल्व करके देखेंगे, दैट्स अ प्रिलिमिनरी टेस्ट, सूंघ के देखेंगे, स्मेलिंग व्हाटएवर. द नेक्स्ट स्टेप इज wet test, okay, for anions, and then a confirmatory test. But some color will come out very, very specially. Now, our focus, I'm reminding you again, is on anion analysis. To start with, cation हम लोग बाद में करेंगे. उससे पहले we will do preliminary for both. ठीक है? Last step है cations का. Generally ये order में ही करते हैं. तो why do we do it in this order? Because some tests are easier to perform than the others. ठीक है? I'll show you. I won't show you. There are some very cool videos, by the way, on the BYJU'S app. If you want to see actual tests and actual colors, Aakash BYJU'S app download करो, you'll see that there. Preliminary test को हम लोग थोड़ा explore करते हैं. Okay? अरे भाई, पढ़ाई कर लो, लोकेशन से क्या करोगे? इंटरनेट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. दुनिया किसी भी कोने में आप इस वीडियो को देख सकते हो. यू कैन लर्न फ्रॉम इट. दैट्स फैसिनेटिंग. आई थिंक दैट्स फैसिनेटिंग. ओह माय गॉड, कृष्णा, आई डोंट हैव अ स्टूडियो. स्पॉइलर अलर्ट, मैं अपने बेडरूम, दिस इज मैं घर से रूम से कर रहा हूँ. फनी गाय कृष्णा, फनी गाय. या यू नॉट बिहाइंड दैट डोर, माय डैड्स टेकिंग रेस्ट देयर. खैर, प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होते हैं? कलर एंड स्मेल एंड सॉल्युबिलिटी. We won't spend too much effort on this. We will figure this out, okay? Color, smell and all of that. And वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए we'll do that first. तो पहली चीज, अगर कोई कलर है तो कलर से हम लोग देख सकते हैं कि maybe it could be copper if it's blue. Please don't do it, but it's a good way to start. अगर सफेद है मतलब कॉपर होने के चांसेस कम है. कम इसलिए बोल रहा हूं because copper is fascinating. We'll talk about when we get to it, right? You know this from inorganic chemistry थोड़ा सा कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कलर होते हैं, अगर उसका पानी निकाल दो तो कलर चला जाता है. इसमें बोल रहा हूं कुड बी, ठीक है. तो अगर सफेद है देन मे बी इट्स नॉट कॉपर आयन, ठीक है. खैर, एनीवे, हरा सॉल्ट है तो इट कुड बी क्रोमियम, निकल और आयन. इनमें से क्रोमियम, निकल आपके सिलेबस में नहीं है, बट आयन आपके सिलेबस में है, तो मैंने एनीवे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया. और सबसे अजीब बात यह है कि हीट करने से कलर बदल भी जाता है. खैर, ठीक है, उससे भी पता चल सकता है. तो इन सबको समराइज करके एक छोटी सी आपको टेबल दे रहा हूं. I get distracted because if I don't get distracted, ताकि फिर आप लोग सो जाओगे, you know, and it's not distraction, it's making sure that you guys don't sleep. That's my whole focus. आकाश भाई, पूरी बहुत ढेर सारे हैं. आकाश, आप पढ़ाई करो यार, टाइम पास मत करो. फिजिकल अपीयरेंस, लुक एट दिस. हियर यू गो. लाइफ का ही तो मजा, अगर बात करो. अगर क्लास में तुम बात नहीं करोगे तो मजा खाएगा, है ना कृष्णा? खैर, लुक एट दिस टेबल विद अ लॉट ऑफ स्कैरी थिंग्स. ठीक है, प्लीज यार, ये चीज ना, इससे डरो मत. एंड लुक एट व्हाट इज इन योर सिलेबस, उसी को याद रखो. आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अ वेरी कलरफुल टेबल, राइट? दिस कलर आउट ऑफ दिस, ये वाला या तो छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट इट. आई एम जस्ट गिविंग यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ये टेबल बनी हुई थी, इट वाज इजी फॉर मी टू गेट दिस टेबल देन टू मेक अ न्यू वन. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है. एंड इसमें कुछ चीज आपके सिलेबस में है. दिस गाइस इन योर सिलेबस, ठीक है. मैंगनीज तो नहीं है, कोबाल्ट भी नहीं है, इसमें ज्यादातर चीजें नहीं है आपके सिलेबस में. ये है आयन है, Fe3+, आई डोंट रिमेंबर. खैर, कुछ बहुत छोटी ही चीजें हैं जिसमें जो आपकी सिलेबस है. निकल भी शायद है, आई थिंक निकल भी शायद सिलेबस में, राइट? कूल. सो द फर्स्ट थिंग, अगर आपको कुछ इनमें से कोई कलर दिख रहा है, यू जस्ट सी अ चार्ट. ये सब याद करने वाली चीज नहीं है. सी अ चार्ट देखो, अच्छा हो सकता है रियल लाइफ में. नीट में हो सकता है एक दो चीज याद करनी पड़े, बट एज यू सी पूरे टेबल में 3-4 ही है. निकल का एक और कंपाउंड, या निकल के मतलब काला हो जाता है, ठीक है. सल्फाइड्स देखो, सब ज्यादातर काले ही हैं, ठीक है. सल्फाइड्स आर ऑल ब्लैक. दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट ओवर हियर, ओके. एनीवे, कॉपर हाइड्रेटेड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ब्लू. सो एक दो चीज बस नोट करने की है, ठीक है. दूसरी चीज, अगर मैंने हीट किया और उसका कलर बदल गया, तब लुक एट दिस वेरी फैसिनेटिंग.
इनमें से कोई हमारे रेल में है? सिर्फ ये दोनों। देखो मैंने बोला था कि अगर सफेद है देन मोस्ट लाइकली इट्स नॉट कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है कॉपर सल्फेट जो है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, बट उसमें से जैसे ही आप इसको जो है हीट करेंगे बन जाता है, पानी निकल जाता है। इनफैक्ट दिस इज अ टेस्ट फॉर वाटर। ये तो अभी सिलेबस में है नहीं, मैं तो तैयारी कर रहा था आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे अभी याद है कि जब पानी व्हेन यू स्टडी द चैप्टर हाइड्रोजन ना, तो हाइड्रोजन चैप्टर में दिस इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर तो है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी था, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं कहां यूज होता है। कहानी ना सुनने से you are able to form these connects, mental connects. And I'll give you a bit of a side this thing. Okay. Very, very good question, Jyoti. Very good question. If you're going to ask me questions, I will look up online. I may not entertain them. I'm just, I'm being extremely nice about this, not being rude at all. But yeah, ठीक है कहानी. There was an NIE thing, right? Newspaper education. Times of India उस समय करते थे हमारे स्कूल में. हम लोग थे 7th standard में. वो बंदा आया. He came and told us, very nice sir, right? Said, I'm going to make you remember these 40 words by the end of this class. Like, hey, what 40 words? Any 40 words. What any 40 words? हम 40 लोग ने 40 whatever, there were 40 years in class, हम लोग एक word बोले. And he found a story about it. It was amazing. And तब ना मुझे, I was very young. I was 8th grade, right? I'm like, what now? Not in 8th grade, clearly. And he did that. Like, he found a story around it, random words, कुछ कहानी वानी बनाई. यार ये तो केमिस्ट्री है, इतना मुश्किल नहीं है, एंड आप लोग बायो करते हो, यू कैन फिगर दिस आउट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ओके, दिस इज नॉट क्रेजी, इट्स वेरी डूएबल. प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल, इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल एट ऑल, नो पन इंटेंडेड. खैर, लेट्स गेट बैक टू दिस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इट्स पॉसिबल इफ यू पुट योर हार्ट टू इट. ओके, अगर आप चाहो तो कर सकते हो. सो डोंट गेट स्कैर्ड विद दिस एंड वी विल फिगर इट आउट. यस कृष्णा, एब्सोल्युटली सिलेबस था क्लास 10 में, बट इट इज यूज्ड एज टू डिटेक्ट वाटर आल्सो. तो इवन थोड़ा सा पानी का एंट्रेन्ड मॉलिक्यूल्स हैं, they will immediately make that white colored copper sulfate blue, and then you know कि अरे पानी was formed, whatever was formed. So let's look at the flame test. Although flame test technically is a part of cations, but बहुत आसान चीज है, हम लोग शुरुआत में भी कर सकते हैं. It's something we can do in the starting. I know the usual orders do anions first, then do cations. I understand, but ये आसान चीज है, and this is something you will find easy to do, and my goal is that कि आसान से go from known to unknown. आप जो जानते हैं उससे जाते हैं, then we'll go to something that you may have not heard of. ठीक है, cool. So what you do is you mix these cations, मतलब salt को आप mix करो with concentrated HCl, ठीक है, and then heat it with platinum or nichrome. Why these two? Because no reaction with these. Okay, ये चीजें, निक्रोम क्या होता है? निकल और क्रोमियम. अरे ये क्या हो गया भाई? निकल और क्रोमियम का अलॉय 80% to 20%. ये सब कोई पूछेगा नहीं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ठीक है. और इसकी वजह से एक निकलता है बहुत ब्यूटीफुल फ्लेम, वो जेल पेन वाला फ्लेम, बट मच मच बेटर. ओके, और ये कलर्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. मेटल्स में यही तो ब्यूटीफुल चीज है. इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अराउंड, दे आर फ्री टू मूव अराउंड. और ये नॉर्मली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के साथ ही होता है. आई विल शो यू, आई विल गिव यू एग्जांपल्स. बट थिंक व्हाई? बिकॉज जाहिर है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, है ना. इट बी इजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर, ग्रुप 1 ग्रुप 2. बाकी एज यू गो लेफ्ट टू राइट बढ़ ही जाता है ना. CO का कलर, यू मीन कार्बोनिल और यू मीन कोबाल्ट? आई थिंक यू मीन कोबाल्ट, लाउड मशीन, राइट. हाँ, बोरैक्स बीम टेस्ट. अरे वाह हीरो, लाउड मशीन आई थिंक इज हियर फ्रॉम जेईई, या फिर ये पढ़ चुके हैं. आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस. दैट इज अ ड्राई टेस्ट. दैट्स अ ड्राई टेस्ट. Hey, are you from Discord, dude? Because I did spam your Discord a little bit. Hey, देखो, I'm doing some sessions on Ruby JE adjacent. Yeah, that's a very interesting thing. We'll do that. Try test हम लोग end में करेंगे. Hey Anish, it's all right, Mudassir. No tension. आप लोग तो पुराने दोस्त हैं. कभी भी आइए, कभी भी सेशन देखिए. No issue whatsoever. खैर, flame colors, they're produced from the movement of electrons, the metal ions present in the compound. What does that mean? Take an example. Sodium. Electronic configuration मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए. Sodium in its unexcited state. Okay, unexcited मतलब कि it's not even an ion. Ion मतलब 11 हो गया. अगर Na+ बन गया तो बन जाएंगे ये भाई साहब, निकल जाएंगे, है ना. That's what happens, right? 1s2 2s2 2p6 मतलब ये हो गए 10 + 1 मतलब कि 11. तो अगर Na+ बना पहला तो ये भाई साहब निकल जाएंगे. This guy like टाटा बाय बाय, ये चला गया, ठीक है, बन गया तुम्हारा आयन. Then if you heat it, something interesting happens, right? Electrons they jump to higher energy levels. इसका आइडिया आपको है, you have an idea about this. How? You remember?
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा कुछ याद आया? व्हेन यू हीट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, फिर एमिशन स्पेक्ट्रा भी होता है, राइट? एमिशन स्पेक्ट्रा क्या था? कुछ इलेक्ट्रॉन्स went to very high energy level and then they fell down. When they fall down, अगर वो विजिबल रेंज में है तो बामर सीरीज बोलते थे, अल्ट्रावायलेट में तो नहीं, इंफ्रारेड में बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे उसको? याद आ रहा है? तुरंत तुम लोग भी तो बताओ क्या बोलते थे उसको यार, बाकी सीरीज याद आ रही है किसी को? मोर साल्ट वाला एक्सपेरिमेंट एंड केमरोफा वाला टाइट्रेशन. देसी डूड, आई डोंट थिंक यू, मे बी यू मिस द लास्ट सेशन, बट चेक इट आउट, उसमें मैंने केमरोफा का लिंक दे दिया है. मोर वाला विल डू आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, सब चीज एक दिन में थोड़ी ना कर लेंगे. राइट नाउ द फोकस इज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक है? फोकस ऑन सॉल्ट एनालिसिस राइट नाउ. ओके, कूल. Lyman Barber Passion. Okay, cricket. Yes. Thank you for that. ठीक है. Thank you for getting me back to the point. Now, कुछ वहां पे स्पेक्ट्रम थे, मतलब कि कुछ ही लाइंस अब्सॉर्ब होती थी, कुछ ही लाइंस जो है एमिट होती. लाइंस मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ. क्यों? बिकॉज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. यू नो ऑल ऑफ दिस. आपका ऊपर मैं बोझ नहीं डाल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है कि सोडियम लाइट देता है. क्यों लाइट देता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, ऊपर जाता है and then it falls down. Now when it's falling back down, it may not fall all the way back down. एक स्टेप में रोल करेगा धीरे धीरे, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो बहुत ढेर सारी लाइन आएंगी, और वो ढेर सारी लाइन का जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, वो कंटिन्यूस आपको दिखता है येलो कलर. ओके, सो वी वांट टू रिपीट दैट फॉर यू. जो ऊपर गया, keep falling down, keep falling down, fall down. Now when it falls down, it happens to fall in that energy range of visible radiation. Visible मतलब जो भी हमारा हम लोग देख सकते हैं, परसीव कर, हमारी आंख परसीव कर सकते हैं, राइट? समथिंग टू समथिंग नैनोमीटर, 340 टू 7 व्हाटएवर कुछ है ना, 360. आई एम नॉट दैट गुड एट फिजिक्स, आपको ज्यादा मालूम होगा, ठीक है? जो भी है वो 300 टू समथिंग 700 नैनोमीटर के बीच में येलो है, कुछ 400 के आसपास, 300 400 के आसपास वो है, आपको दिखता है, ठीक है? अरे यार येलो कलर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि उसी रेंज में गिर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल. डिड यू गाइस फॉलो दिस गोल्डन येलो? ओके, ग्रेट. ये समझ में आया हाउ इट वर्क्स? हाउ डज अ फ्लेम टेस्ट वर्क? You probably already know this. You know this for sure, not probably, you know this. हाइड्रोजन में पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है. ओके, 3800 to 1700. Cool. Awesome. I understand if for NEET folks who have maybe not looked at this from the exam point of view, उन्होंने बोर्ड्स में maybe पढ़ा होगा है, और maybe what do you call that, practicals में किया होगा, तो उनको थोड़ा सा little bit यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, but नहीं, it's okay. It's not. That's what I'm here to do. That's all. I'm just revising things for you. अब देखिए यहाँ बहुत ढेर सारे लिंक्स, यहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज दी हुई है. इन चीजों का कलर नहीं दिया है मैंने, क्योंकि दो कलर दिखाते हैं और बहुत ही यहाँ, तो इसलिए आई कुड नॉट कलर इट इन अ पर्टिकुलर थिंग, बट ठीक है. सो हमको फोकस करना है, आई थिंक वी ओनली हैव टू लुक एट सोडियम यार, सोडियम एंड पोटेशियम, राइट? सिलेबस में क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं. क्या था सिलेबस में? हम लोग कौन सी स्लाइड नंबर पे अभी, वो भी वापस करना, 23. एंड सिलेबस में था सोडियम था. अरे सोडियम ही नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है. अरे तो फ्लेम टेस्ट का, अच्छा कैल्शियम है, थैंकफुली कैल्शियम है, बेरियम है, और क्या है? चलो कैल्शियम बेरियम है, ये दोनों कलर्ड है. तो दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग बिकॉज सोडियम नाउ प्ले द स्पॉइल स्पोर्ट. ओके, व्हाट सोडियम डज इज वेरी स्ट्रांग. ठीक है, सोडियम ये दोनों तो नहीं है, बट ये है, और बेरियम है, ठीक है, ये दोनों है, ठीक है? दिस इज इन योर सिलेबस, डोंट वरी, ये पूरा याद मत करो, बट नो दैट सोडियम प्लेज अ स्पॉइल स्पोर्ट. हाउ डज इट प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट? ये जो येलो है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि इट ओवरपावर्स द अदर कलर्स. ओके, सो अगर मिक्सचर्स एंड सॉल्ट थी, मतलब उसमें सोडियम भी है, बेरियम भी है, कैल्शियम भी है, अब आपको सिर्फ येलो दिखेगा, वो लाल दिखेगा ही नहीं, कैल्शियम का लाल दिखेगा ही नहीं, वो जो हरा है बेरियम का, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट बिकॉज दिस येलो ओवरपावर्स इट. नाउ व्हाट डू यू डू इन दैट केस? In that case, you use something really fascinating. And this is where the beauty of science, the beauty of physics comes into the picture. You use cobalt glass. किसी ने ऊपर बोला था कि cobalt is blue. किसने बोला था? हमारे amazing loud machine. You said something very beautiful. You said that cobalt का color blue होता है. That's amazing. Now you'll use that property, cobalt glass की. And हम लोग उस शीशे से देखेंगे flame color को. Blue color के शीशे देखिए. Blue color से शीशे देखने से क्या होगा? What do you think? ब्लू कलर के शीशे देखने से क्या होगा? Why are we doing all that? यहां पे कुछ लिखा तो है कि थ्रू दैट कलर्ड ग्लास, बाय द वे ब्लू होता है कि नहीं? एक बात बता दो, ब्लू तो हम बोल रहे हैं बिकॉज आपने ब्लू बोला, आई एम नॉट श्योर ब्लू होता है नहीं होता. ब्लू होना ही चाहिए, यू आर सेइंग ब्लू होना चाहिए. ब्लू. सादिया, व्हाट्स अप?
कलर्ड ग्लास के थ्रू देखने से द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट क्या है, थोड़े से फिजिक्स रेल में चले जाते हैं, बहुत थोड़ा सा। हमको जो दिख रहा है, जो हमारी आंख में आ रहा है, लाइक वट एवर कम्स इनटू माय आईज इज व्हाट आई एम सीइंग। नाउ इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट लाइक सोडियम, देन व्हाट आई सी इज येलो, वही डायरेक्ट है। बट अगर मैं किसी चीज का कलर देख रहा हूं, लाइक से दिस फोन लुक्स ब्लू टू मी, आपको तो सफेद ही दिख रहा है, खैर ये थोड़ा व्हाटएवर, इट लुक्स ब्लू टू मी, ठीक है, तो मतलब कि मेरे आंख पे ब्लू कलर आ रहा है और बाकी सब कलर हो गया अब्सॉर्ब बाय दिस मटेरियल, रिफ्लेक्टेड जो है वही दिख रहा है, थोड़ा फिजिक्स का फील्ड। तो व्हाट दिस ब्लू डज इज इट अब्सॉर्ब्स some colors and it reflects blue. So what is it absorbing? It's probably absorbing yellow. Complementary color blue का क्या होता है, ये सब पढ़ लेना यार फिजिक्स में, मैं आपको ओवरलोड नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं ये छोटी सी चीज कि ब्लू जो है इट रिमूव्स द येलो, एंड बिकॉज इट रिमूव्स दैट येलो पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, इसलिए यू सी बिल्कुल ही अतरंगी कलर, इंस्टेड ऑफ वायलेट यू सी पोटेशियम टू बी क्रिम्सन, कैल्शियम लाल की वजह ग्रीन दिखता है, स्ट्रॉन्शियम भी ये दिखता है और बेरियम भी ब्लूइश ग्रीन दिखता है। हमारा फोकस है कौन सा, ये और ये, डोंट वरी अबाउट द अदर्स। Is there an S block? Okay, sure, great. जहां से भी पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, यहां से पढ़ना है एनसीईआरटी से पढ़ लो तो बेस्ट है मेरे दोस्त। खैर अभिषेक, व्हाट्स अप, ये पार्ट तो बहुत छोटा सा पार्ट है, राइट। द रीजन आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दिस इज बिकॉज आई वांटेड टू बी कंफर्टेबल कि इज नथिंग न्यू। हम लोग जो मेन चीज है इज एनायंस एंड कैटायंस, we'll get to that. Any doubts so far guys? आप लोग बहुत शांत हैं, आई होप यू एंजॉयिंग द स्टोरी, इसलिए आप लोग शांत हैं, जो हम लोग कहानी बोल रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है। कोई डाउट्स हैं, एनीथिंग ऑन योर माइंड? I don't think I've said anything very complicated right now, but हम लोग quickly recap करता हूं, right? This cobalt glass, it makes sure जो अगर सोडियम है तो it looks like it's जो सफेद, मतलब no color, and because of that it blocks yellow light basically, yeah, blue filter. वही आपके आंख में भी होता है ना, खैर anyway. So the glasses that you see, those reflect blue, right? Do you have those glasses? Like some of these glasses have the protective coating, right? I don't know if you can see it, उसमें blue color दिख रहा है क्या? खैर anyway, देख लेना, figure it out, right? This is how this works, and this is very useful when you have sodium in the mix, because sodium plays spoil sport, and because of that you can figure out these with these colors under cobalt glass. ठीक है, cool. Shazan, we are doing stoichiometry, हम लोग कर तो रहे हैं, you can check it out. I'm calling it mole concept, Shazan, you can check it out on our channel. Here is a quick question. The flame test allows us to distinguish metals based on the color emitted by the flame. The color of the flame is observed because the electrons jump to higher orbitals or the electrons return to the original orbitals. बताइए, conceptual सवाल पूछ रहे हमने, बस दो ही ऑप्शन है, what do you think? आंसर बताइए इसका, क्या है आपके मन में, what are you thinking? Do you know the answer to this? Need help on this? क्या चल रहा है? कहानी तो बहुत लोग सुन रहे हैं, बट प्लीज आंसर भी तो दीजिए। अविका, मुश्किल लग रहा है? डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू आउट। लोकेश, ए, ओके, ठीक है। देखिए, कॉन्सेप्चुअल सवाल सबसे मुश्किल होते हैं, क्योंकि अगर मुश्किल मतलब कि सबसे बढ़िया होते हैं कि इफ यू गेट इट राइट इन सेम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू गेट इट रॉन्ग, इट्स ओके यार, ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, तो इसलिए आई एम सेइंग दे आर ब्रिलियंट, तो देयर इज नो +4 -1, वो सब प्रेशर नहीं है ना। खैर देखो, कलर इसीलिए दिखता है क्योंकि एनर्जी निकलती है। Let me talk about this for a second, okay? Because I see that there are few of you who are giving an answer different from what is expected. Let's call this N1. Let's call this N2. पूछा ये जा रहा है कि which case will give me energy, this color? Is it A or B? ये पूछा जा रहा है. This is what the question is asking for. If this diagram helps you. देखिए, okay, Avika, Logesh, and long name starts with Desi is saying A. Okay, ठीक है, cool. देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है टू हायर ऑर्बिटल, दैट मींस इट रिक्वायर्स एनर्जी, वो एनर्जी दी जा रही है फ्लेम से. सो लेट मी ड्रॉ दैट ब्यूटीफुल फ्लेम हियर. ओके, दिस फ्लेम इज गिविंग एनर्जी. तो इन दिस केस कलर तो नहीं आएगा ना, कलर तब आएगा जब ये एनर्जी लूज करेगा. क्यों? यू हैव डन दिस इन फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना. फोटो इलेक्ट्रिक में किया क्या? नहीं, आई थिंक उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो किया ही है. सॉरी, एमिशन स्पेक्ट्रम, व्हाट आई एम सेइंग, एमिशन स्पेक्ट्रम में किया है. देन अगर ये गिरता है, वेयर डज एनर्जी गो? इलेक्ट्रॉन goes from here to here. Where does that energy go? It comes off as radiation. Okay. Now, if that radiation is in the 300 whatever, क्या था, 3800 आपने लिखा था, मुझे तो याद नहीं है सब चीजें. अगर it is in this range, then visible light है ना, and तब आपको दिखता है कलर. ठीक है.
So electrons return to the original orbital. मतलब it's a hypothetical idea. दो हैं, चार पांच हो जाए ओरिजिनल में, आप यूं ऐसे कि ओरिजिनल में जाना जरूरी नहीं है, बीच में भी गिर सकता है. आई एग्री विथ यू. आई मेड दिस क्वेश्चन वेरी डायरेक्ट टू चेक जस्ट वन कॉन्सेप्ट, जस्ट एक चीज कि भाई लाइट क्यों निकलती है. तो लाइट तब निकलेगी, और बेसिकली रेडिएशन तब निकलता है, रेडिएशन, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट, तब निकलता है जब इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम अ हायर स्टेट टू अ लोअर स्टेट. ओके, एग्जैक्टली देसी, एब्सोल्युटली. बहुत लोग हैं लाइफ पे, बट आप लोग बहुत शांत हैं, लगता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है. इसलिए मैं पहले आई वांटेड टू गेट डन विद दिस बिकॉज दिस इज सम आइडिया दैट यू आर कंफर्टेबल विद. आई मीन यू नो दिस ऑलरेडी. खैर, दिस इज इट. नाउ लेट्स गेट ऑन टू थिंग्स दैट आर वेरी इजी. बहुत सिंपल है, याद करने वाली बातें. कार्बोनेट्स आप ये पढ़ चुके हैं शायद, राइट, कि उसको हीट करने से दे डिकम्पोज इजिली. ऑल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं हुए तो मजा कहां आएगा, है ना. एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम, इनको छोड़ के बाकी सब कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव यू CO2. ओके, नाउ हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, कार्बोनेट के टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं अगर आप हीट करें किसी को तो क्या होगा. ओके, दैट्स व्हाट लुक एट एक्शन ऑफ हीटिंग. What should you do now for NSEC? NSEC मतलब समझा नहीं लोगेश, समझा नहीं. खैर, that was about carbonates. Bicarbonates also same stuff. All bicarbonates. अरे ये 2 ऊपर चला गया, 2 तो नीचे होना चाहिए CO2 का. अरे भाई साहब 2 ऊपर कहां चले गए आप, रुकिए. ये छोटी छोटी चीजें रियली बग मी, इसको तुरंत अभी ठीक किया जाए. ये PPT ना थोड़ी जल्दी में बना है, I'll be honest with you, because we're like अरे ये तो बहुत सही है, आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, we should definitely make video on it and we did that. तो माफ कीजिएगा all these small tiny things. खैर, let's get back to the session itself. कहां गया, रुकिए, चैट आपकी, one moment, locating chat. Okay, cool. All right, राघव आप भी हैं. कुछ बोल तो रहे थे नहीं आप. खैर, electrons return to original orbital where they release energy and transit from higher to lower state. Absolutely no one. Absolutely. खैर, carbonates, bicarbonates, both of them decompose. Carbonates ये वाले नहीं करते हैं, बाकी everything else does. Cool. All right. What about bicarbonates? Yeah, bicarbonates भी करते हैं. Okay, we spoke about that. Nitrates. This is interesting. Okay, nitrates when you heat them, they give you 2 things. One is NO2 and they give you oxygen. And this is interesting. NO2 is a colored gas. नहीं ये वाला, sorry. NO2 is this brownish gas. Okay, and it gives some very fascinating tests that we'll look at later. Reddish brown, and ये इससे तुरंत पता चल रहा है, देखो तुरंत ही पता चल गया कि नाइट्रेट था, बिकॉज मैंने गर्म किया इसको. ठीक है, नाउ सी वी हैवंट गॉट इनटू द डिटेल्स ऑफ एनायंस, कैटायंस, कुछ नहीं, बस मैंने गर्म किया, उससे अगर मुझे डार्क ये रेडिश ब्राउन मिल गया तो तुरंत पता लगा भाई ये तो है ही नाइट्रेट. कुडंट बी एनीथिंग, इट हैज टू बी नाइट्रेट, हैज बी नाइट्रेट. ओके, उतना चलता है, ठीक है. ओ, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम केमिस्ट्री, गुड मैन लोकेश, ऑसम ऑसम ऑसम. Carbonates particular temperature, this you'll have to look it up. CaCO3 is very high. CaCO3 is about 1000 degrees, right? You'll have to look up. It depends on where you are in this thing. How strong is the bond? Like if you go down the group, ionic bonds are stronger. If you go up, they're more covalent. General trends and all that. So I can't give you a number. You have to look it up on actual energy trends and stuff. Okay, cool. So look at this. Back to NO3 minus ion. मतलब कि nitrate यानी कि NO3 minus ion. देखो हम लोगों ने तो पढ़ाई शुरू भी नहीं की और ऑलरेडी पढ़ाई खत्म भी हो रही है. मतलब आई टोल्ड यू आई एम नॉट डूइंग एनायंस, बट मैं धीरे धीरे आई एम सीपिंग इट इन. वी आर टॉकिंग अबाउट एनायंस राइट नाउ. यू हीट देम, यू गेट दिस एंड दिस. सो ऑक्सीजन का भी टेस्ट होता है, बट वी वोंट टॉक अबाउट दैट, राइट. वो था पी ब्लॉक में, अभी नहीं है, छोड़ दो. बट दिस क्लियर. एंड NH4NO3 जो बोला ना कि सफेद सॉल्ट होता है हमेशा, दिस इज इंटरेस्टिंग. ऑन हीटिंग इट डायरेक्टली गिव्स यू N2O, नॉट NO2. तो इफ आई वर टू गेस, सवाल किस चीज पे आ सकता है, दिस विल बी वन ऑफ दोस थिंग्स पे सवाल आ सकता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई एक्सेप्शन टू द रूल है. और कौन से में, विच ऑफ दीज डज नॉट प्रोड्यूस व्हाटएवर रेडिश ब्राउन कलर गैस, जो आंसर. खैर, एनीवे, सो दीज टेस्ट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट कंक्लूसिव. NO2 वाले को छोड़ के, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट बता देता है कि रेडिश ब्राउन मतलब है ही, बट वी शुड स्टिल डू सम कंफर्मेटरी टेस्ट. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी गोना फोकस ऑन राइट नाउ. अभी कैसा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? लेट्स टेक अ टाइम आउट फॉर अ मिनट. चैट पे लोग हैं, थोड़ा शांत हैं, थोड़ा एनर्जी वापस ले आते हैं. मुश्किल लग रहा है कि आसान लग रहा है? जस्ट टेल मी इन द चैट. इजी और डूएबल? इजी, राइट? इजी या हार्ड? व्हाट डू यू थिंक?
अब ओपिनियंस बताइए। Numan, yes, easy dubs. Ayush, what up, Ayush? My God, bro, काफी late huh for you? And Tuesday on a school night too. सही है भाई, सही है, सही है, सही है। यार दे बढ़ गया, इसलिए तो हम कर रहे हैं, बिकॉज आपके सिलेबस में, दैट्स द होल डील। एंड आई नो दैट दिस इज न्यू फॉर यू, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ। आई एम नॉट इन एनी हरी व्हाटसोएवर। वी विल फिगर दिस आउट टुगेदर, विल फिगर दिस आउट टुगेदर, ऑलराइट। आयुष, दैट्स हाउ द कंपनी इज, आई मीन दैट्स व्हाट दे डू। पिछले 5 मिनट से सब्सक्राइब कर रहा था। कूल आयुष, ऑलराइट। या एब्सोल्युटली दे बढ़ गया। It's practical chemistry. In the NMC update, they mentioned in the end practical chemistry, right? इस chapter का, I mean, इस session का नाम देख लीजिए. Especially practical chemistry, I'm talking about qualitative analysis. So, we've looked at a lot of intermediary tests. पहले आंख से देख लिया कि भाई किस कलर का है, फिर then we were like कि चलो let's heat it, तो जला लिया, ठीक है, हीट करके डिकम्पोज के वो देख लिया, then कलर बदल के, ग्लास बदल के, we saw that. And we looked, okay, carbonates can mostly dissociate other than a couple. Bicarbonates, all of them dissociate. Nitrates also dissociate, give you NO2 and O2. बस NH4 NO3 gives you N2O laughing gas. ठीक है, ये था preliminary चीजें. Now let's talk about wet test और confirmatory test. ठीक है, yeah, yeah, for sure, देबर गैस सब होगा, definitely होगा. Yeah, I just spoke to our friends over at the other side of the pond, so to speak. Yeah, they're working on it very hard, देबर गैस, to make these sessions for you right away. बहुत कोशिश जारी है, ठीक है. Moderate अमेरिका, that's okay. I know it's new, right? कोई भी नई चीज is a little scary at times, yeah. Standard, you mean which standard is this in? This is 12th, I would say. 12th, yeah. Better to do in 12th than 11th, I would say. Till here, everything looks studied. Yeah, cricket, that's awesome. Yes, Lokesh, ये सब JEE syllabus में, you're right. Chalo, let's get back to the topic. और कुछ है? Anything on your mind at all, guys? Anything on your mind? Yeah, school, if you have a good lab in your school, then it's probably doable. Ayush, I'll probably wrap this up by 8:15. And I'll maybe do, which is another 20 minutes, Ayush, but it's very late, I know. You can carry on, dude. You can check it out later. But pretty cool that you're attending this. But it's very useful for JEE, by the way, also. JEE, NEET, all of it. Hey, Malti, thanks, man. Thanks for your support. Okay, let's get on to these wet tests, okay? Moderate? Okay, Avika. Good. अच्छी बात है. कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. That's beautiful. All right. What's the color of orange? Shazan. I don't understand the question. आपको समझा नहीं. They never did Chem Pro. यार practical में बहुत मजा आता था यार. I had amazing teachers. Shivgami ma'am was my lab teacher, and she made sure हम लोग हर चीज ध्यान से करें. We would try to sneak in and take some of these chemicals and burn them, and she had a very strong eye. Anyway, yeah, very nicely done. Physics lab भी बहुत मजेदार थी. वो तो लाइट बेंच, वो सब ऑप्टिकल बेंच कर रहे हैं, बहुत मजा आता था. Oh, 6 pi RG, all of that falling वाला thing. विस्कस लिक्विड में ऊपर से डालो, the velocity doesn't increase, stops. भाई लैब्स बहुत मजा आता है यार. खैर चलो, आप लोग क्या डॉक्टर बनने वाले हो, आपको क्या लग पा रहा है? You're going to be working with real patients, yeah. Respect, massive respect. खैर, let's look at the different kind of reactions, yeah. Maybe some precipitated form, maybe there'll be a change in color, maybe there'll be evolution of gas. Yeah, these things you're studying from 8th standard, 7th standard. What is chemical reaction? Where there is a change of state, evolution of gas, है ना? ये सब तो आप पढ़ रहे हो. Let's get into hardcore mode now. Okay, from here on, we are starting. Okay, not starting, but we are getting like into the thick of it. Anions की हम लोग analysis करने वाले हैं. So broadly, there are 3 groups. I'll give all this to you. You don't have to write anything down. Just listen to me for now. This is a nice story. सुनो, बाद में अपने notes बनाना आराम से. This is it. ये आपको पास होगा Telegram पे. So what you do is you take your salt, okay, and you divide into 3 different groups depending on how their behavior is with certain chemicals. कौन से chemicals? अगर वो dilute H2SO4 HCl के साथ कुछ वेपर या गैस देता है, that is group A, या sometimes also known as group 1. ठीक है? अगर it gives you a vapor or gas only with concentrated H2SO4, then it's group 2. And something interesting happens. It also gives you a precipitated AgNO3. You're like, हैं? AgNO3 क्यों? देखो, look at this. These ions. Here comes this amazing idea, बहुत seeping in very slowly, ionic equilibrium का. सिल्वर सॉल्ट्स के KSP वैल्यूज बहुत ही लो थे. यू रिमेंबर, बहुत ही लो से 10 power minus 13, 10 power minus 40. कुछ करने की बात नहीं है. आई एम नॉट स्केयरिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू हैव एन आइडिया. ये भी नई चीज नहीं है. यू विल बी एबल टू डू दिस वेरी आराम से, है ना? देखो,
बिकॉज सिल्वर के आयॉन्स अदर देन AgNO3, बाकी सब आयॉन्स का KSP वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब वो तुरंत प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो दे आर वेरी गुड, इसलिए AgNO3 इज वेरी गुड इन आइडेंटिफाइंग दीज आयॉन्स स्पेसिफिकली। ठीक है, कूल। AgNO3 अगर ऐड करो तो करेगा, ठीक है, NO3 माइनस को छोड़ के। लास्टली कुछ नहीं होता है, वट एवर एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, देन इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट विद बेरियम आयॉन्स, एंड उसका एग्जांपल है सल्फेट व्हिच इज ग्रुप 3। सो आज देखते हैं कितना टाइम है, वे 15 मिनट्स, वी विल ट्राई एंड कवर जितना कर सकते हैं, वी विल ट्राई एंड टू ग्रुप 1। शैल वी डू दैट? ग्रुप 1 कर लें, वी विल टेक ब्रोकन टेस्ट ट्यूब। यार टेस्ट ट्यूब तोड़ी है मैंने ना लाइफ में कि भाई, या माय टीचर वेरी फॉरगिविंग यार, आई डोंट नो हाउ इतने खुराफाती बंदे को उन्होंने हैंडल किया। You did bio practicals? Amazing, Dheeraj. Amazing. CR7, you're back, huh? Cristiano Ronaldo? It will be what it will be, yaar. It depends on your confidence on that day. Okay? More than anything else. This concept, what is tough or easy, depends on, I won't even say preparedness. One, preparedness is great. Preparedness is amazing, right? वो तो जरूरी है, hard work जरूरी. But उसके साथ, you have to be confident, you have to feel good about yourself. And then, you'll give it a best shot. That's all that matters. ठीक है? टफ इजी क्या फर्क पड़ता है ना, रिलेटिव है, डजंट मैटर, यू गिव इट योर बेस्ट शॉट एंड यू विल बी ऑलराइट। ठीक है, ऑलराइट। नो वन विल डू 3 or 4 ऑफ दीस सेशंस, ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ द पेस इज, आपको कैसा लगता है, हाउ यू विल टू फिगर इट आउट ऑफ दीस सॉल्ट एनालिसिस वन, देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर, वी विल फिगर इट आउट। ठीक है, ऑलराइट। हे अक्षु, वेलकम। खैर, लेट्स स्टार्ट विद दीस एनायंस। बहुत है स्क्रीन पे, सो इसमें से ग्रुप 1 ग्रुप 2 कौन सा है, ग्रुप 2 ग्रुप 3। ग्रुप 1 इज these 3 including nitrite, nitrite के साथ है group 1, group 2 is these, all of these, this is group 3, okay। ये जरूरी है to be able to segregate them, on what basis of segregating it, group 1 मतलब dilute acid के साथ कुछ गैस देता है, group 2 यानी concentrated acid के साथ गैस देता है, and AgNO3 के साथ react करता है, all of these react with AgNO3 form PBT, group 3 reacts with nothing, barium 2 plus साथ precipitate देता है like sulfate। ठीक है, cool। So you usually use something called a water extract when it's soluble in water, or something called a sodium carbonate extract when it's insoluble in water. We'll look at it when we look at it. ठीक है, इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पानी, let's say कि पानी में हम लोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, क्या होता है, Na2CO3 यार, वो होता है ना, simply it's a basic salt, you know this, yeah, you dissolve it in water, that's it। खैर, there are some extra information over here, don't worry about this exact amount and all of that, ज़्यादा जरूरी नहीं है। The main idea is कि Na2CO3 is there and water is there, ठीक है, I'm not spending time on this, it's just there, extra information। Let's move on, let's look at the test for carbonate ion। Carbonate ion, you know what we can do, अगर तुम इसको हीट करोगे तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, इट्स सपोज्ड टू बी ऑल कार्बोनेट एक्सेप्ट, नहीं यार, एक्सेप्शन से, you can't always heat because sodium, potassium and all of those, यार वो हीट नहीं होंगे, तो क्या करें, then what do, you take a solid salt, okay, and then extract the carbonate ions। Oh, so you take a very reactive species like Na2CO3, sodium carbonate, right? Look at Ayush on fire, Avika, absolutely, you'll get the Ayush, man। Okay, I'm going to let you in a bit of a secret, okay? Ayush, can I tell them, I'm going to tell them, Ayush is from 10th standard, and this is crazy, man, yeah, he's doing ICSE, no, he's doing CBSE in 10th grade। It's amazing, I used to see you be so active in 10th standard. That's great, that's great। Khair, he's absolutely right, lime water milky, that's why I've got a wide smile on my face, lime water milky, yeah। So what's happening, you take 0.1 gram of a salt in a test tube and add dilute H2S4, that's the first thing, you add dilute H2S4, उससे तुरंत निकलता है CO2 gas, और जहां निकली CO2 gas होगा effervescence, how do you know CO2 निकला है, you turn lime water milky। But Ayush, can I suggest something? Hey, thanks, man. Thanks, no one. Thanks for feedback. एक चीज बोल दूं, and this funny thing, this is a pet peeve, right? When you spell lime water without the space, then you talk about CaOH whole twice. This is lime water without a space. ठीक है? As soon as you put a space, look it up online. I'm not kidding. This is नींबू पानी, and I'm not saying this to make fun of anybody. I think it's just नींबू, छोटा है वो, बड़ा वो, पता नहीं, नींबू पानी, इतना हिंदी नहीं आती। This is what do you call it? Lemonade. Okay. So please, for the love of everybody who you love, please, lime water के बीच में space मत डालना, ठीक है? Small thing that really bugs me, but this I've been telling everybody from like 6th grade, 7th grade, तो आपको भी फिर से बोल देता हूँ, lime water में space नहीं होता है, ठीक है? So it turns lime water milky,
यहाँ देखो हमने स्पेस डाल दिया, देखो अमेजिंग, इतना कहानी बता रहे थे. This is awesome. खैर, so interestingly, and you know this from 10th grade, after you pass the gas for some more time, milkiness disappears. Reaction है, देख लो, ये याद है? You know these reactions? You guys already know these? Yeah? I'm pretty sure you know these, right? You take some sort of a carbonate, okay? You've converted it into Na2CO3. मेरे पास some carbonate था, I put this thing with Na plus, I've reacted with it, I've got Na2CO3, if it exists, ये हुआ है. This gives me some gas. Now that gas is colorless and odorless. उस gas को I pass through lime water, no space, yeah, no space, it becomes milky because you get CaCO3. Now, उसको ज़्यादा carbonate डालो, becomes bicarbonate, which is soluble in water. ठीक है? Cool? Okay? This is it. This is one confirmatory test. This is not confirmatory, this is an indicatory test for CO3. Confirmatory test आ गया confirmatory test. Precipitate बना. Because देखो यार, इसमें चक्कर ये है ना, in this milky non milky वाला thing, अभी ये हो सकता है, and this has happened to me, okay? Lab में you don't have control over how fast the gas is coming out of your being produced. And हम लोग, when we were shooting videos recently, that happened as well. We were trying to light something, hydrogen pop sound we were trying to do, and it was not a pop sound, more like a boom. Yeah, so you got to be careful about with gases, because I know state of matter हटा दिया है, but you appreciate the fact that gases have a mind of their own. They go away very quickly. So the problem with this is कि यार milky बना कि नहीं बना, you don't know. If it happens too quickly, milkiness चली गई. Now milkiness could be because something else also, because SO2 भी हो सकता है, milky बन सकता है. खैर, तो this is a good test, but it's a indicatory test. Confirmatory test है ये वाला. AgNO3 के साथ डालो, बन गया precipitate, boom. Okay, that's one confirmatory test. Here's one more. Second confirmatory test is कि इसी चीज को, now just to make sure, Ag2CO3 को तुम करो heat, मतलब करो boil. Let me put that triangle over here to show heat. It gives you a yellow or a brown precipitate, and फिर से वापस आता है CO2. That's it. खैर, let me show you what this amazing thing looks like. Let's change this to, yeah, here you go. A quick thing of the whole thing becoming milky and then non-milky again. Reamer team and reactions. Oh my God. Organic वाले दोस्त यहाँ पे आ गए. हम धन्य हैं. See this, check it out. Dilute sulfuric acid. Okay, here's the reaction. And CO2 gas तुरंत fumes निकलते रहते हैं. And this is lime water. Okay, without the space. I hope space ना हो इसमें. Please space ना हो. खैर anyway. Yay, no space so far. पूरा बन गया milky. ठीक है. CO2 minus confirmed, more or less. But if you keep putting CO2 in it, कहाँ गया आगे वाला part? Keep putting CO2 in it. अरे भाई, keep putting CO2 in it. अरे रुको, हाँ, देखो. No space. खैर anyway. Is the same thing playing again? I was the same thing फिर से चल रहा है लग रहा है. रुको देखने दो. I think same thing फिर से चल रहा है. खैर, lime water is supposed to not get milky after that. Oh, great, Reamer team. Good to know. New student of Aakash. Good. I hope you're having fun here, man. Is it going to turn non-milky? I'm still waiting, hoping कि वो वाला भी animation हो. But looks like it's the same animation that's playing again. You'll have to see it to check it out. Yeah, dude. So if you keep passing CO2, it's supposed to turn non-milky again. I think that animation got missed out. Apologies, my good friends. Khair. Anyway, but you know this happens. Let's look at the test for sulphide and we'll call it a day. Hey, Hare Krishna. What's up, Vikas? We'll call it a day with this, okay? I know बहुत भारी हो गया, 1 घंटे का सेशन हो रहा है. Your mind is already like, भाई, बहुत नई चीजें हो गई. Let's just do sulphide, ठीक है? With sulphide, we will do most of group 1 ना. Nitrate onwards हम लोग अगली बार करेंगे, don't worry. Sulphide test भी हम लोग करते हैं पानी and carbonate वाले से, ठीक है? So you take warm and dilute H2SO4. Oops, hold on. आगे चला गया. Hold on. Okay. You take warm and dilute H2SO4 and you get H2S. This is the gas I was telling you don't smell. It gives you such a headache, yaar. So in 11th grade, my class was right next to the chemistry lab. There's amazing teacher, Shekhar and all. So we should keep going there, do these tests, and there would be amazing students like you and me who would mess something up. And फिर H2S is heavier than air. Think about it. Density of H2S. Air में क्या होता है? Nitrogen. उसका मास कितना होता है? 28. Oxygen कितना होता है उसका? 32. अब H2S कितना हो गया? 32 plus 2. भाई हो गया ना density more than air? 34. यार, that's the problem. It sinks. It sinks to the ground. It stinks. It stinks the whole place up. Gives you a headache. It's not fun at all. Khair, it's good because using H2S, I can figure out that इसमें था sulphide ion. Okay. So I dip this in lead acetate, which is yellow in color, and I get a black precipitate. Okay.
लेड सल्फाइड कंप्लीटली काला होता है, दैट कंफर्म्स कि भाई हो गया सल्फाइड. तो माय इनिशियल टेस्ट व्हिच वाज से इंडिकेटरी टेस्ट, इंडिकेटरी बोलते हैं इसको, इंडिकेटोरी टेस्ट, okay, gives me this rotten smelling H2S, and the confirmatory test is lead acetate. ये acetate क्या हो गया? CH3COH है ना, उसके साथ रिएक्ट किया गया, some salt of Pb and some this thing, ions get exchanged, and what you get is this. Okay, AC मतलब acetate, AC is the same as CH3CO minus. This I've been doing some organic chemistry, so I've been writing this is the same thing. ठीक है, and ये काला color, this confirms it. Last animation for us to see today. Yeah, absolutely remote even. Check it out on Aakash, BYJU'S, NEET, सब मिलेगा. Hey, cool blues, what's happening? What's happening? Hey, minor. Sulphide ion. Sulphide Newman, I don't know if it's in the syllabus, so just for the interest of the crowd here, I will not talk about it, but ping me on Telegram, we'll talk about sulphide. ठीक है, sulphide. Khair, here it is. Bhai, play ho ja. There you go. Got lead acetate. Here's your salt. What's happening to your salt? I'm going to be putting some acid in it. And as soon as I put acid, nikalta H2S, rotten egg smelling compound. And wait for it. There it goes. And boom. Oh, come on, guys. Come on, don't leave me hanging. Yeah, there you go. Black precipitate. There you go. It was slower than I expected, but here you go. Okay, sulphide confirmed. Another confirmatory test of sulphide is, it's alright, Numan, text me on I Teach Chem on Discord or on Telegram, and I'll direct you in the right direction for resources. Alright, so another confirmatory test is doing the whole Na2 extract thing. Matlab basically NH4OH or Na2CO3. You can take either of these three guys, okay? You add a drop of this beautifully red colored solution called sodium nitroprusside. Did you know that there was a country called Prussia? I hope I'm spelling it correctly. But this was basically Austria. It was a huge kingdom, right? It was very, very powerful, very rich kingdom. There was a TV show on Netflix on this as well. Queen Elizabeth I, I think, was from there. All my knowledge comes from TV shows and movies, okay? Literally everything. So if I seem knowledgeable, it's because I've seen a lot of TV shows and movies. Anyway, so Prussian blue, the color comes from their the flag and all that. Anyway, so sodium nitroprusside, however, is this weird red color. And it becomes this amazing color as soon as there is S2 minus in the system. Okay, so won't go into details. This is a complex compound clearly. This is also a complex compound, and red से बनता है purple और हो गया confirmation sulphide ion की. ठीक है? I know I said I'll call it a day after this. This is the last cool animation you'll see. I think we'll stop here. ठीक है? रुको, चलो. अरे क्या हुआ भाई? अरे चल नहीं रहा है यार. There you go. Okay. Any doubts, guys? How you feeling? Again, just checking in again, just like a litmus test, so to speak, lack of a better word. Yeah, doable, right? A lot of theory, but we've scaled bigger heights. We've done metallurgy. We've done DNF. ये तो कर ही लेंगे. इसमें तो reaction ही reaction है. Ooh, look at that crazy color, huh? Ammonium hydroxide डाला, ये color बना. And look at that red sodium nitroxide. Red डालते ही बन गया this purple, pink, weirdly very, very strong color. ठीक है? Cool. This is it. इसके बाद I have nitrite up for you, but in the interest of your sanity, I will stop here. तो मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा burnout हो गए हैं. How you feeling? Do you want to do nitrate? Nitrite करना है? 3-4 slide ही हैं. You want to see? I want to see in a lab, dude. Ayush, it's insanely fun in a lab. There's just 3 or 4 slides. Shall we do nitrate ions? Nitrite ions? Literally 3-4 slides हैं. We'll be able to finish it. Shall we finish it up? Hey Komal, how you doing? कर लें इसको. Nitrite ions. Nitrite ions. Yeah? Alright, you carry on, Ayush. You please carry on. Universal litmus paper. Bye, Ayush. See you. You guys will stick around. Let's just finish up nitrite ions. With that, हम लोग खत्म कर लेंगे group 1 anions. Okay? या फिर group A, जो भी बोलना चाहो. ठीक है? So, what does nitrite ion do? A nitrite ion gives a reddish brown fume of NO2. Oh, you remember? I told you in the starting that when you heat NO3 minus, basically nitrates, then you get NO2 and O2. Here, I have not this, I have NO2 minus. Alag cheez hai. They are both very different. Nitrite. Okay. So, important here. Nitrite reacting with H2SO4, which is dilute.
gives you these guys, and this combined with some oxygen and forms NO2, which is brown. ठीक है, उस brown को कैसे test करें? That brown colored NO2 gas, you react with Ki. This you have done. This you have done. We have done this in redox. Okay, redox में हमने किया है, redox reaction में किया है. Screen clear नहीं है कोमल? Maybe just turn up your resolution. Voice कम आ रही है? Nitin? Anybody else who feels कि voice कम आ रही है? Well, the session is almost done. I really hope your voice ठीक से आ रही थी throughout the session. My mic seems all right, man. I am wearing it also. Sometimes I don't wear the mic, but I am definitely wearing it, and it's connected over there. So yeah, ठीक है. Increase the resolution, Komal. You'll be all right. So Ki reacts with NO2, KNO3I2. देखो है redox reaction. How is this a redox reaction? देखो, iodine goes from -1 to 0. This is getting oxidized. है ना? Oh, that's interesting. So this is going from +4 to 6 - 1. अरे नहीं, ये तो कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे. ये तो हमने कुछ फंकी चीज की है. हैं? ये तो +4 है और इधर +5 है. ये दोनों हो रहे हैं ऑक्सीडाइज. ये तो कुछ गड़बड़ी हो गई. इसके बारे में सोचना पड़ेगा. हाँ, ध्यान से सोचते हैं. 4 - 1 no -6 n + 6 = -1. तो ये तो होना चाहिए +5. तो रेडॉक्स तो नहीं है. नाउ यू थिंक योर नेट इज स्लो. Hey, what do you think about this reaction, guys? यहाँ पे क्या हो रहा है? If this getting oxidized, something you get reduced. हमने कुछ तो गड़बड़ी की है. खैर, I'll get back to you on this reaction. This is a reaction that I got from the net. I hope it's correct. Looks correct. Looked correct to me at that point in time. Looks balanced. But कुछ तो funny लग रहा है अभी. खैर. Anyway, how do you confirm this? Starch plus iodine gives you a nice blue color. Okay. So you take acidified Ki and starch, and it turns blue. That's how you do nitrite ions. And here is another beautiful explanation. Okay, so here it's very clear कि ये हो रहा है oxidize. The same idea, right? You oxidize NO2 minus ions, and this gets reduced. Okay, ठीक है? Cool. Yeah. This is which standard? Jeffrey, this is, I think this should be 12th grade. This should be appropriate to do in 12th standard. Okay. So nitrite decolorizes MnO4 minus in H plus. भाई जान क्या किया है? MnO4 minus में. This is damn funny. Hold on. इसको तुरंत 1 सेकंड में ठीक किया जाए. Okay, I'll fix it in post production. I'm kidding. I'll just fix it right now. This should be ऊपर, right? And there you go. चले गए भाई साहब ऊपर. ठीक है? So how do you do nitrite ions? You start with the same thing. Okay, you put it in HCl or H2SO4, and then you put it in the carbonate extract, right? What you get is NO2. And NO2 then can be reacted with a lot of other things. Okay, ये हमने एक चीज देखी थी. Yeah, the other idea is if you know that they're nitrate ions, it will decolorize MnO4. KMnO4 minus का होता है purple color, and acidic solution में ये बन जाता है this thing which is colorless. Redox reaction, guys. Redox ले लो या DNF ले लो. We have studied all this. I have done these sessions. You can check them out. Another one, and this is the craziest thing. Last point for today. Absolutely the last point. I'll let you guys go after this. Last point आज के लिए. एक second, just checking the chat quickly. Last point for today. Oh, very nice, Numan. That's great to know. Absolutely. Yeah, Raja. Take care. Take care, Raja. Don't worry about it. Take care. Now look at this. This is a famous question, like a favorite of tests, people who take tests and stuff. Not these kind of tests, the kind that you guys give. The confirmatory test of NO2 minus ions is this guy right here. Okay. You take NO2 minus ions in acetic acid, so it forms HNO2 basically. You react that with thiourea. Thiourea. Urea क्या होता है? NH2 whole twice CO. Thiourea में ऑक्सीजन को हटा के डाल दो सल्फर. ठीक है, बन गया thiourea. Thiourea के साथ रिएक्ट करो, बन जाता है HCN minus ion. Okay, this is called a thiocyanide ion. Okay, that ion with FeCl3 gives you this blood red color, which is a complex. And this confirms that you have nitrite ion, NiTrite. And with that, we are done with group 1 or group A anions. Okay, so I'll give you guys notes for this. Don't worry about anything. The quick summary of group 1 or group A anions is that when you put them with HCl or H2SO4, they give away some gas. Okay, and uske baad we do some confirmatory tests. All right, that was it for today. Jeffrey, what are you not able to follow? मैं समझा नहीं आपकी बात. Few types of H2SO4, adding a solution of potassium iodide, confirmed presence of nitrite ion. Numan, awesome.
Didwana, that's great, that's great, that's great. So yeah, dude, I think we'll call it a day right now because you have another class at 8:30 and I don't want to keep the other teacher waiting. I'll give you guys notes. I know ये थोड़ा भारी है because yeah, it's new. Anything new is challenging, but I'm here all the way. We'll figure this out. Jeffrey, try and watch the rest of the session. Maybe because you joined abhi beech mein, so you find this to be a little difficult, but check the whole thing out and you'll be all right. Cool. I'll send these notes out to you on Telegram. Please check them out and got you covered. We got you covered. All right. Chalo. Have fun. 8:30 there's another session coming. I'll see you again soon. On Thursday, we'll do some more concept. And soon after that, we'll continue more of practical chemistry. Okay? Chalo. See you all. Bye. Bye. Good night all. I hope maza aaya. Mujhe to bahut maza aaya, as always. Thanks a lot, Jeffrey. I hope you're all right. All right. See you. No one soon, man. Soon after this. Maybe on Thursday or next Tuesday. बहुत जल्दी हम लोग उसको cover करते जाएंगे. ठीक है? Bye. Bye all.